Hello everyone, welcome to the Engineers Career Group. Myself Prasoon, and from last 5 to 6 years, I'm teaching for ISRO, GATE, DRDO, and other state and national level examination for Computer Science Department. And आज के सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए कंपाइलर डिजाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कितने फेजेस होते हैं और किन फेजेस का क्या सिग्निफिकेंस है और कंपाइलर डिजाइन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रीजन है उसके पीछे, और कंपाइलर बेसिकली क्या होता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड सो मेनी स्टेजेस ऑफ द कंपाइलर। तो हर एक स्टेज को एक एक करके एनालिसिस करेंगे और फिर करके डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वाई वी आर स्टडिंग दिस कंपाइलर डिजाइन। ठीक है। तो सबसे पहला कंपाइलर डिजाइन का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ लाइक वी कैन से इट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। हम कह सकते हैं एक तरह का क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, किसी भी सी लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, कंपाइलर करता है। और वो कन्वर्ट किस में करता है? इट इज इनटू द असेंबली लैंग्वेज। ओके। सो वंस द कंपाइलर हेल्प टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को किसमें कन्वर्ट करें? असेंबली कोड में जनरेट करें। तो ये क्या होता है? बेसिक वर्क ऑफ अ कंपाइलर। ठीक है। तो जिसको हम किसी भी टेक्स्ट बुक के किसी भी पहली लाइन का इंट्रोडक्शन हम देख सकते हैं कंपाइलर हमारा क्या हो सकता है। बट एक्चुअल में इन मेमोरी, इफ यू सी, इन मेमोरी वी हैव लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दैट इज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इक्वेशन होता है। ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ओके। अनटिल अनलेस कोई कंडीशनल या अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट हमारे पास आता है। ठीक है। तो कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम कंसिडर करें, लेट्स से इफ वी हैव एनी हाई लेवल लैंग्वेज, let's say any high level language, so this high level language is converted into what? Converted into assembly. Okay। assembly में हम कन्वर्ट करते हैं assembly language। सो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारा क्या होता है? बेसिक सी कोड, जिसमें आप एक सी कोड या सी प्लस प्लस कोड कह सकते हो, या जावा कह सकते हो। ठीक है। या पाइथन कह सकते हो। ठीक है। डॉट नेट कह सकते हो। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग लैंग्वेज में हम लिखते हैं कोड्स को। ठीक है। Now, what is this high level language consist of? This high level language consists the series of instruction. Also contains the functions. क्या contain करता है? Functions contain करता है, वेरिएबल कंटेन करता है। ठीक है। प्रोसीजर कॉल्स होते हैं इसमें। ठीक है। प्रोसीजरल कॉल होते हैं। ठीक है। और अगर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये सब चीजें हैं, साथ ही साथ इसके पास और क्या होगा? और क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ठीक है। लाइक इफ आई से, इफ आई राइट अ हाई लेवल लैंग्वेज, लेट्स से int main, सो एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन पार्ट से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो इफ आई राइट समथिंग लाइक दैट, इफ int x is equals to a is equals to 2, b is equals to 3, and similarly c is equals to 5. And if I write an instruction x is equals to a plus b star c. So यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है। अगर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो इट हैज टू, लाइक दिस इंस्ट्रक्शन will be stored in some memory location starting from 0 to like 255. So if consider it is accessing the 256 memory location, और ये 256 मेमोरी लोकेशन पे कहीं भी ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट हो सकता है। तो एज वी नो, मेमोरी हमारा किस तरह से हो सकता है? दो तरह से। ठीक है। या तो डेटा इंस्ट्रक्शन एक साथ कंसीडर करें, या तो सिर्फ डेटा कंसीडर करें, या तो इंस्ट्रक्शन कंसीडर करें। तो अलग अलग तरह का मेमोरी हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और इसका इवेल्युएशन करते हैं। लाइक प्रिंट एफ में समथिंग, वी हैव मेंशन सम स्टेटमेंट टू बी प्रिंटेड। ओके। सो when we execute this, what will happen when we execute this type of code?
द कंपाइलर टेक्स द कमांड ओवर इट। ठीक है, कंपाइलर हैंड ओवर, कंपाइलर क्या करता है, इसका कमांड लेता है, एंड दिस कंपाइलर will generate the assembly code, will generate the assembly code. And now, what is this assembly code? Can we write assembly code? Yes. So, if we talk about the load store architecture, लोड स्टोर आर्किटेक्चर की बात करें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लोड इफ वी हैव इंस्ट्रक्शन समथिंग लाइक से x is equals to a plus b star c, so it has to load the value. Okay, so all values should be loaded first. So we can load a, so cap say, so load b, and load c, something like that. Okay, so after that what will happen, the higher precedence will be considered first. So b star c, so mul b star c, like mul b comma c. So what will happen, it is ultimately going to load the assembly language. And how it is converted, assembly language से कैसे convert होता है, it is finally converted into what, some type of binary bits. ठीक है, so we have converted some type of binary bits, and these binary bits will be present in the memory locations. Okay, so ultimately this computation will be performed by CPU. Okay, so CPU, in that also ALU, and with the help of ALU, some registers will be helping with that. ऑल्सो यहाँ पे ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है, इस हाई लेवल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन है, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से वी हैव इंट्रोड्यूस सम न्यू इंस्ट्रक्शन हियर, so say we have instruction, new instruction, that is y is equals to a plus b. Let's say this is an instruction, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, तो सिक्वेंशियली एक्सेस करेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को भी सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेगा. तो इफ वी हैव टू से कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, तो इट इज एग्जीक्यूटेड बाय प्रोग्राम काउंटर, मींस इट इज रिफ्लेक्टेड द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. So PC is a special register used in the ALU part, okay, in the computation part, and PC will point to the next memory location where the actually data is present, okay, where data or instruction is present, it will point, okay. So basic work क्या है कंपाइलर का, कंपाइलर का बेसिक वर्क ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हाई लेवल लैंग्वेज को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द असेंबली लैंग्वेज. ओके, so basically what it does, can we say compiler design, this compiler design will work as a language translator? Language translator? Yes, this compiler will work as a language translator. Okay, so apart from this, we have assembler, we have interpreters, and compiler, preprocessor directives. So what is preprocessor directives? Okay, so preprocessor directives consist of the basic functionality of a हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज के बेसिक फंक्शनैलिटी कंसिडर करता है, लाइक इफ यू हैव सो मेनी इनपुट फंक्शन, सो मेनी आउटपुट फंक्शन, जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए हम यूज करते हैं, जो भी फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, जिन टाइप को हम यूज कर रहे हैं, वो सारे लाइब्रेरी को क्या कंसिस्ट करता है, यहाँ हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर भी हम इंक्लूड करते हैं, लाइक इफ आई राइट लाइक हैश इंक्लूड library dot h, library dot h, if I write something like that. Okay, so what does this mean? So this means what, a library, all the library functions will be included in that. Okay, include means including. So this section is what, preprocessor directive. तो हम कह सकते हैं क्या, कंपाइलर का बेसिक क्या क्या है, जो भी आप सोर्स कोड लिखते हो उसको अपने इनपुट लेता है, और एज अ हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है इनपुट, और आउटपुट हमें क्या देता है, एज अ असेंबली पार्ट. ओके, so this is the work of what, a compiler. Okay, now बात करें अगर हमारे पास, लेट्स से अगर हम फेजेस ऑफ कंपाइलर की बात करें, तो एक बार अगर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई सोर्स लैंग्वेज, सोर्स कोड लैंग्वेज अगर हमारे पास आता है, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, वी हैव लाइक स्टेजेस. ठीक है, कभी भी कोई एक कंपोनेंट उसके अंदर नहीं होता. ठीक है, तो कंपाइलर के अंदर क्या होते हैं, वी हैव सम लेयर्स. ओके, सो इट इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर्स, एंड दीज लेयर्स व्हाट, परफॉर्म टास्क स्पेसिफिकली. ठीक है, तो ये लेयर्स क्या करते हैं, अपने टास्क को स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं. तो इसके अंदर कौन कौन से लेयर आते हैं, तो विल डिस्कस ईच लेयर वन बाय वन. ओके,
तो यहाँ पे लेयर्स जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, किसी ने एक टोकन, एक कह सकते हो आप, एक कंपोनेंट को लिया उसके, और कंपोनेंट के साथ लेने के साथ साथ उसके कंपोनेंट के साथ लेने के साथ साथ वहां पे अ, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका वैल्यू, उसका आइडेंटिटी किस टाइप का है, वो सारा कुछ आइडेंटिफाई करना। वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसके बाद इट इज गोइंग टू वर्क इट एज अ फुल। ओके, नाउ सिंटेक्स ट्री इसमें डेवलप करना मीन्स वेदर द इनपुट हैज बीन गिवन टू द कंपाइलर, इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, वेदर इट इज फॉलोइंग द रूल और नॉट। ठीक है, कोई रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन कंपाइलर डिजाइन कंपोनेंट्स की, तो हमारे पास बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स आते हैं कंपाइलर के फेजेस। तो लेट्स से we have new new phase like phases of compiler. If we discuss phases of compiler, so in this phases of compiler what we start with, सबसे पहला क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज अगर हम लिखते हैं तो इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज। ओके, सो फर्स्ट फेज इज व्हाट, आवर लेक्सिकल lexical analyzer. Okay, so first phase is what, lexical analyzer, and after that it will go with the syntax analyzer. Okay, syntax analyzer, and after that syntax analyzer it is going to be passed to the semantic analysis. Semantic analysis. Semantic analysis, or analyzer you can say, semantic analyzer. And after that it is going to be passed in the intermediate code, intermediate code generation, intermediate code generation. So after that code generation, then it has to be code optimization, optimization, and lastly we have machine dependent, machine dependent, dependent code optimizer. सो इन दिस लेवल फर्दर इट हैज बीन डिवाइडेड। अगर हम बात करें इसमें कई और लेवल्स होते हैं जो कि हम हमसे क्या होते हैं, हिडन होते हैं। बात करें अगर यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लेवल की बात करें, तो दिस लेवल इज प्योर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, प्योर होता है। सो वॉट एवर टेकिंग इनपुट इन द लेक्सिकल एनालाइजर, इट विल टेक टोकन स्ट्रिंग, इट विल फॉरवर्ड टू द सिंटेक्स एनालाइजर, then syntax analyzer passes to the semantic analyzer, semantic analyzer passes to the intermediate code generation, then intermediate code generation passes to one more level that is hidden between these two. So can we write here? Yes, we can write here machine independent, independent code optimizer, code optimizer. Okay. So this is one of the also level included in that machine independent code optimizer. After that, it will come to the code generator, code generator, and then it is going to be code optimizer. Okay, so code generator, after that code optimizer, and then it will be producing the machine dependent code optimizer. Okay, so how it is going to work? Okay, सबसे पहला हम देखते हैं कुछ और चीजें हैं जो कि इनको एग्जीक्यूशन कराने में हेल्प करती हैं। what are those codes? So can we write here something like that? Yes, so there must be something which will be helping around. क्या हेल्प कर रहा होगा यहाँ पे? कैन बी राइट हियर व्हाट, सिंबल टेबल. Okay, so whatever starting phases, like if I talk about these phases, okay, so these phases whatever will use, जो जो भी चीजों को यूज कर रही होगी, वो there way the information will be stored into this symbol table, that bit of information, and that information is used by these
phases. Okay, these last three phases. Okay, so basically हम कह सकते हैं क्या, this phase is called as analysis phase, analysis phase phases, and these phases are what called as a synthesis phase, called as a synthesis phase, synthesis phase, synthesis phase. Yes. So analysis phase, and this is called as a synthesis phase. See, this is also known as what, front end, and this is also known as back end. ओके, सो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझना चाहें तो समझो आप, हमारे पास कोई एक इंस्ट्रक्शन आता है, लेट्स से वी हैव इंस्ट्रक्शन, तो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से x इज इक्वल्स टू a प्लस b स्टार c. ओके, तो दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो अगर हमें ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो इट हैज टू पास टू द लेक्सिकल एनालाइजर, एंड लेक्सिकल एनालाइजर व्हाट विल डज, इट हैज सम स्पेशल फंक्शनैलिटी विद इन दैट. तो अगर स्पेशल फंक्शनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर को क्या मिलेगा, कैरेक्टर स्ट्रीम मिलेंगे. लाइक फर्स्ट कैरेक्टर इज व्हाट, x, देन इज इक्वल्स टू, देन a, देन प्लस, देन b, देन स्टार, देन c. सो लाइक दैट. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, a, x इज इक्वल्स टू a प्लस b स्टार c. सो दीज आर व्हाट, characters. Okay, a single character. So can we say it is going to accept the character? So yes, we can say it is a stream of character will be taken as input in the lexical analyzer. Or lexical analyzer, what will happen, it will generate the token. Okay, it will generate the token, and in that token it is a token stream. Okay, so it is a token stream. So apart from that, we have some more functionality of the syntax analyzer. Syntax analyzer हमारा क्या करेगा? It is going to generate the syntax tree. Okay. So second functionality is what? It is going to generate the syntax tree. Okay. So syntax tree it will generating, and after syntax generating, it will check whether it is a whether that it is following the semantic rules or not. Okay. Semantic rules mean what? अगर किसी पोजीशन पे, लेट्स से अगर हमारे यहाँ पे क्या है, किसी पोजीशन पे ये x क्या कर सकता है, सिर्फ वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और ये पर्टिकुलर टर्म्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इवेल्युएशन हो सकती है, इनकी वैल्यू इवेल्युएट होके कहीं ना कहीं रिजल्ट स्टोर होगी. तो दिस इज स्पेसिफाइड फॉर सम स्पेशल पर्पस, दिस x इज स्पेसिफाइड फॉर सम स्पेशल पर्पस. तो जब हमारा एक्स स्पेसिफाइड है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये इनकी वैल्यू इवेल्युएट होके किसमें स्टोर होगी, इसमें स्टोर होगी. तो कैन वी से दिस दिस इफ आई से इट एज आइडेंटिफायर, तो दिस आइडेंटिफायर इज एक्टिंग एज अ रिजल्ट स्टोरेज. यस. तो जब ऐसा होगा तो जो हमारा सिंटेक्स ट्री होगा, जिसको हम सिंटेक्स ट्री को और भी क्या बोलते हैं हम लोग, पास ट्री बोलते हैं. आई टॉक अबाउट द पास ट्री. सो पास ट्री इज व्हाट, सो पास ट्री के बारे में क्या हम कह सकते हैं कि इट इज अ पासिंग टेक्निक. लाइक हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सम काइंड ऑफ ट्री. ओके, सो इट कैन बी टॉप डाउन पासिंग, इट कैन बी बॉटम अप पासिंग, सो लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम अप पासिंग भी हो सकता है, टॉप डाउन पासिंग भी हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है. ठीक है, तो जो भी सिमेंटिक एनालाइजर करेगा वो क्या करेगा, चेक करेगा वेदर इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट. ठीक है, जिस पोजीशन पे जो वैल्यू होनी चाहिए तो वो करेक्ट है कि नहीं है, वेदर इट इज फॉलोइंग सम रूल्स और नॉट. सो व्हाट विल हैपन, दिस पास ट्री विल बी रूल्स, dependent upon some rules category. Okay, so definitely then intermediate code generation. So intermediate code generation means what, now it is moving towards what, assembly language की तरफ बढ़ रहा है, ये assembly language की तरफ converted ये process में है. ठीक है, सो इफ वी सी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे बेसिकली कोई एक लैंग्वेज अगर है तो उसका हम मशीन कोड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं. लाइक इफ आई राइट समथिंग लाइक ऐड ए बी, so if I writing this thing, okay, so what it does, okay, so ये हमारा क्या है, एक
T1, let's say T1 is executing this instruction. Okay, so T2 is executing some other instruction. And in which language it is written? ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये हमारा क्या है? बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट में हमारे पास क्या होंगे? इंस्ट्रक्शन को लिखा होगा। ठीक है, और जैसे मान लो मैंने लिखा सब बी कॉमा सी। ओके, इफ आई राइट सब बी कॉमा सी, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट? अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारे पास असेंबली लैंग्वेज अलग तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं? जो भी हम यहाँ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। So code generation is what? A machine independent code. Okay. So after that we need to minimize. Okay. So suppose करो इसको हमने T1, T2, T3 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग लेवल में लिखा हुआ है। तो कैन वी रिड्यूस दिस? कैन वी रिड्यूस दिस? हम इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 7 साइकिल्स में वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है उसको 5 साइकिल्स में कर सकते हैं, हो सकता है उसको 4 साइकिल्स में कर सकते हैं। तो वी कैन रिड्यूस इट। ओके, सो वी विल रिड्यूस इट। सो optimization part will handle this thing. Okay, and now after that, at the last phase it is going to give the target machine code. Okay, so this assembly language after optimization, it will give what? The target machine code. Target machine code. Machine code. Okay, so give us target machine code. So these are the phases of compiler. Okay, in this phases it will work. So एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे कि what is the particular functionality of lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, then intermediate code generation, code optimization, and machine independent code optimization, and lastly target machine code. What it does और किस तरह से ये वर्क करता है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है? अलग अलग कैरेक्टर को निकालता है, उनके रियलाइज करता है, उनका एक पास ट्री जनरेट करता है। सो व्हाट इज दिस पास ट्री? ओके, सो दिस पास ट्री इज व्हाट? पास ट्री को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ वे, लाइक पास ट्री हम कह सकते हैं पास ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, so parse tree concept can be divided into two types. So first one is what? Bottom up parsing. Bottom up. And second one is what? Top down parsing. Top down parsing. Okay, so bottom up का मतलब क्या होता है? We will construct from bottom. Okay, can we say bottom? Bottom means what? Consider this is as a tree. Okay, so this is as a tree. So when we are starting from top, from this position, okay, so that means we are passing, we are evaluating the expression from top position and going through down. And ये किस order में हो सकता है? Left to right. Okay, so it is always left to right. Left sequence से then going to the right sequence. After that, coming for the bottom up parsing. So bottom up parsing और क्या कह सकता है? It is going to be constructed from the bottom. Okay, that too from right side. Okay, can we say from this position? Yes, from this position. So bottom up follows what? Rightmost derivative in reverse. Okay, so why we are saying reverse? Because it is going to analysis the stream, that instruction from the rightmost derivative in the reverse direction. So can we say it is going to construct this one first, then it is going to construct this one first, then it is going to together this one, then after that it is going to construct this one, then after that it is going to construct this one, like that. So ultimately it is constructed the full one. Okay, so हमारा क्या कह सकता है? सीरीज ऑफ ऑप्शन में टॉप डाउन पासिंग एंड बॉटम अप पासिंग डिपेंड करता है। ठीक है, सो विल कम ओवर दैट। टॉप डाउन पासिंग और बॉटम अप पासिंग का डिफरेंट डिफरेंट कैटेरिया है। लाइक टॉप डाउन के अंदर किस तरह से हम पासिंग करते हैं, किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, तो वो हम देखेंगे आगे के सेशन में। तो दिस इज व्हाट? अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लेक्सिकल
analyzer, and phases of compiler, and how the work. This is the basic idea of compiler design. ठीक है? तो compiler design हमारा क्या होता है? Basically, it works as a high level language to assembly language converter. Okay, so it will convert and it will read all the instruction in the high level language and it will give the desired target code. That's all. So this is it for the session today, and I'll come with another session where I'll be discussing about different types of compilers phases. Okay, so what is the work of lexical analysis? What is the work of semantic analyzer? And what is the work of intermediate code generation, then code optimization, and how the target address is produced? किस तरह से हम target address को produce करते हैं? So ये हम complete scenario को हम एक साथ consider करेंगे with an example and so that the picture should be clear. Okay. So see student. तो first of all हमें क्या करना है? इसका basic concept लेना है. You don't need to mug up everything given in the PYQ and everything. You need to understand the concept, logic. Okay. So when you understand the logic and concept, then definitely you can answer any type of question. Okay. So I hope you will be understanding this session and in case of कोई भी आपको query हो, you can contact with us and we will definitely sure we will be happy to answer you. Okay. So thank you so much for this session and we'll see you in the next session. Thank you.